Okay. So in the morning session we have seen the vasodilators. So next part. So up to this we have seen the anti-hypertensive drug, centrally acting drugs. Then we have also seen alpha blockers and beta blockers. Now in the next part is nothing but the we have also seen the vasodilators. Remember vasodilators, they will cause tachycardia. They will dilate the blood vessel and they will cause reduction in the blood pressure by decreasing the preload, by decreasing the peripheral resistance. Now next part of anti-hypertensive drugs, that is nothing but the ACE inhibitors. Okay. So ACE inhibitor. What do you mean by ACE inhibitor? So you know that hypertension is mainly because of the three reasons. Okay. So first reason I told you, it is due to the excessive activity of sympathetic nervous system. So if there is a excessive sympathetic outflow, that means if there is excessive release of noradrenaline, so you will suffer from hypertension. Okay? If there is excessive sympathetic stimulation, that is another reason. Second major reason is that nothing but the kidney. So any disease of kidneys, say for example, okay, स्टेनोसिस ऑफ रीनल आर्टरी, जो किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसका स्टेनोसिस हो गया, मतलब वो ब्लॉक हो गया. So again there is activation of one system. If there is a decreased blood flow to kidney, there is activation of this renin angiotensin aldosterone axis. You can say RAS, RASS, renin angiotensin aldosterone system, or RASS, RAS, renin angiotensin aldosterone system. So this system, or this is known as a renal mechanism. So RAS, RAS, renin angiotensin aldosterone system. Okay. So suppose that if there is a decreased blood flow to the kidney को अगर blood flow कम हो गया, it may be due to different reason. Say for example आपका blood pressure कम हो गया तो obviously blood flow कम हो जाएगा. If there is a stenosis of artery, renal artery, किडनी को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसको अगर ब्लॉक हो गया या स्टेनोसिस हो गया, किडनी विल you will have decreased the blood flow in the kidney. If there is a less volume in the blood, if you are suffering from hypovolemia, blood का volume कम हो गया तो blood में, okay, so if you get if blood volume of your body decreases, so blood flow to kidney will also decrease. So there is activation of this system, renin angiotensin aldosterone system. Now this system is very important to control the blood pressure. So what happens? So if there is a decreased blood flow to the kidney, so beta 1 receptor present in the again juxtaglomerular cells of kidney, juxtaglomerular cells, JGX, GG cell, juxtaglomerular cell. So decreased blood flow to the kidney by any reason that activate the beta 1 receptor in the kidney, which causes the release of renin, which causes release of renin. So which causes release of this hormone renin. What is the renin? So renin is nothing but the hormone. It is a hormone produced by the extraglomerular cells of kidney. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So renin is a hormone produced by JG cell, JG cell, the extraglomerular cells of kidney, in response to decreased blood flow to the kidney. Now what happens? So renin is a proteolytic enzyme. Remember, renin is a proteolytic enzyme. प्रोटियो मतलब क्या है? प्रोटीन. लाइटिक मतलब क्या? ब्रेक डाउन करने वाला. So renin is a proteolytic enzyme. So it will break down the protein. Which protein? This protein. So angiotensinogen. This protein is present in your plasma. It is present in your blood. इससे आपके ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में. तो वैसे ये प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजन. This protein is also present in the plasma or blood. Okay, blood में होता है ये. Now renin produced after stimulation of juxtaglomerular cells, it will break down this protein. So as it is a proteolytic enzyme, it will break down this protein. Angiotensinogen, it is a glycoprotein present in your blood. Okay, so it is broken down into angiotensin 1. Now angiotensin 1 is converted into angiotensin 2, angiotensin by the enzyme ACE.
ACE means angiotensin converting enzyme. Okay, now this angiotensin second is a vasopressor. क्या है vasopressor? Vasopressor मतलब क्या? It will constrict the blood vessel. Angiotensin second is a vasopressor. It will constrict the blood vessel. Blood vessel को constrict किया तो क्या होता है? So if there is a constriction of blood vessel, peripheral resistance will increase and therefore blood pressure will increase. Okay, so angiotensin is a second is a very potent vasopressor or vasoconstrictor, right? Now angiotensin second act on a blood vessel via its receptor known as a AT1 receptor, angiotensin receptor. ठीक है, ये रिलीज होगा angiotensin second, it will act on this receptor and will cause constriction of blood vessel and lastly increase in the blood pressure. Lastly BP increase होगा, blood pressure बढ़ जाएगा. Right? Now this angiotensin second, on the one hand it increases the vasoconstriction and blood pressure, on the another hand it stimulates the production of aldosterone. It stimulates the production of aldosterone. Now what is aldosterone? Aldosterone को क्या बोलते हैं अपन? It is nothing but the एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. इसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ये इसका काम क्या है कि aldosterone will increase salt and water retention. Salt and water retention. तो salt and water retention कहाँ पे करेगा? So aldosterone is an anti diuretic. Diuresis मतलब क्या? More urine formation. एंटी डाययूरेसिस मतलब क्या? यूरिन फॉर्मेशन नहीं होने देगा. मतलब क्या? Whatever salt, sodium or whatever water is present in our blood, so whatever that is being filtered in the kidney, that will be reabsorbed. Okay, that will be reabsorbed under the influence of this aldosterone. So at one hand angiotensin second stimulate the vasoconstriction, stimulate the blood vessel, there is a vasopressor, and increases the blood pressure. On the other hand it will stimulate the aldosterone, which leads to रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट वाटर रिटेंशन होगा तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा. सो इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, लास्टली कार्डियक आउटपुट, लास्टली ब्लड प्रेशर. ओके, सो एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट बाय टू वेज. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी. ओके, ये ऐसे होता है इफ देयर इज अ डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. राइट नाउ what are the drugs acting on a RAS? Drug acting on a RAS, drug which are acting on a renin angiotensin aldosterone system. So first you can, if you are suffering from hypertension, आपके पास क्या क्या options है? First option you have, you can block this conversion angiotensin 1 to angiotensin 6 because that is converted by renin. You can block this renin. So renin antagonist, renin antagonist. Now renin inhibition can be done by, रेनिन को सीक्रेट नहीं होने देना है. कौन नहीं कर सकता? रेनिन एंटागोनिस्ट. ओके, सो रेनिन सिक्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय और एक्टिवेशन ऑफ दिस रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, दैट इज एक्टिवेशन इज प्रिवेंटेड बाय बीटा ब्लॉकर्स बिकॉज बीटा 1 स्टिमुलेशन लीड्स टू रिलीज ऑफ रेनिन. बीटा 1 स्टिमुलेशन क्या करता है? रिलीज करता है किसका? रेनिन का. क्योंकि अगर ब्लड फ्लो कम हो गया बॉडी को, किडनी को कम हो गया, तो ये बीटा 1 स्टिमुलेशन के कारण जे सेल से रेनिन रिलीज होगा. तो इसको ब्लॉक करो. तो बीटा ब्लॉकर्स, ओके, बीटा ब्लॉकर्स दैट्स बीटा ब्लॉकर्स themselves they act as a renin antagonist again. So there are certain drugs which are also renin antagonists known as aliskiren, okay, and ramikiren, aliskiren, aliskiren, ramikiren, okay. Beta blocker, aliskiren, ramikiren, they are all are antagonists to renin. Okay, now renin convert angiotensin 1. Okay, renin convert angiotensinogen 1, angiotensinogen to angiotensin 1. Angiotensin 1 is a decapeptide. Angiotensin 1 is a decapeptide. ये decapeptide. 10 लिखा है. 10 मतलब क्या? 10. Decapeptide means what? 10 among 10 peptide bond. Am I audible to you? Now tell me how many number of amino acids are there in a decapeptide? Yes. How many number of amino acids will be there in a decapeptide? Yes. कितना होगा? चलो ऑप्शन बोलता हूँ मैं. चलो ऑप्शन आपको थोड़ा सा ऑप्शन का चस्का लगाए आपको. ऑप्शन ए 10 अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है ना 11 अमीनो एसिड, ऑप्शन सी 9 अमीनो एसिड, ऑप्शन डी 12 अमीनो एसिड. हाउ मेनी अमीनो एसिड्स इन अ डेकापेप्टाइड? कोई भी बोलो फटाक से. सो एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ कहना बोलना चाहता है? सो रिमेंबर, ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? A peptide bond formation means what? A monopeptide.
will have a one peptide bond. One peptide bond. एक अमीनो एसिड है आपका, ये हो गया बॉन्ड, ये दूसरा अमीनो एसिड. मोनोपेप्टाइड विल हैव टू अमीनो एसिड्स. एक मोनोपेप्टाइड में क्या होगा, दो अमीनो एसिड्स होंगे. डाइपेप्टाइड में कितने होंगे, डाइपेप्टाइड विल हैव टू अमीनो एसिड्स बट three amino two dipeptide will have two peptide bond but three amino acids. Likewise, a tripeptide will have three peptide bond, four amino acids. Tetrapeptide will have four peptide bond and five amino acids. So likewise, that a decapeptide will have 10 peptide bonds but definitely have 11 amino acids. ठीक है, तो अमीनो एसिड ये 11 होगा, तो जो भी 10 9 बोल रहे हैं वो गलत है. सो इट विल हैव 11 अमीनो एसिड्स. ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. एंजियोटेंसिन 1 इज अ डेकापेप्टाइड. रिमेंबर, एंजियोटेंसिन 1 is converted into angiotensin 2. It is an octapeptide. It is an octapeptide. 8 amino acids. It is an octapeptide. Angiotensin 2 is also converted into angiotensin 3. 3 जो है, okay, angiotensin 3. That is a heptapeptide. That is a heptapeptide. Hepta means 7. You don't know, you have to write down this. So angiotensinogen is a glycoprotein that is converted to angiotensin 1 by renin, which is a decapeptide. Angiotensin 1 is converted to angiotensin 2, which is a octapeptide, 8 peptide 1, and then angiotensin 2 will act on its receptor, will also stimulate the aldosterone. Okay, and this angiotensin 2 is converted to angiotensin 3 by enzyme known as angiotensinogenase. Angiotensinogenase. Okay, so that is converted to angiotensin 3 by the enzyme angiotensinogenase. And angiotensin 3 is a heptapeptide, so it has a 7 amino acids. Remember, angiotensin 1 deca, angiotensin 2 octa, angiotensin 3 hepta. तो ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. angiotensin 2 is a dash, बहुत बार आ चुका है. Okay, you have to remember. Now you can prevent this conversion of angiotensin 2, okay, angiotensin 1 to angiotensin 2 by inhibiting this enzyme, by inhibiting the ACE. ACE inhibitors. ACE inhibitors are used. For example, pril, captopril, inapril, lisinopril, perindopril, fosinopril, all the prils are ACE inhibitors. Okay. Then again, angiotensin 2 is an octapeptide, as I told you. Now it will act on its receptor known as angiotensin receptor. So angiotensin receptor, okay, they are GPCR, G protein coupled receptor, okay, and it will bring about the vasoconstriction, blood vessel को constrict कर देगा, will increase the peripheral resistance, will increase the blood pressure. You can block this AT receptor also by using sartans. So losartan, valdesertan, isersertan, all these are the sartan. Okay, now you know that this angiotensin 2 will also stimulate the aldosterone, right? Will also stimulate the aldosterone, now which will increase the blood volume by retaining the salt and water, right. So which will increase the cardiac output and lastly blood pressure. So you can also block this aldosterone by using aldosterone antagonist. Example is a spironolactone, ipreilenone, etc. Okay. So these are the drug acting on a renin angiotensin aldosterone system. इसमें कोई डाउट है किसी को? These are the target. Okay, beta blockers themselves, they are a renin antagonist, because beta 1 stimulation release the renin, so beta antagonist, they will not release the renin. Then again, renin inhibitor, calicyrin, aliskiren, or calicyrin, aliskiren, ramiskiren, aliskiren, ramiskiren. Then ACE inhibitor will prevent the conversion of angiotensin 1 to 2 by inhibiting this angiotensin converting enzyme in april, lisinopril, fosinopril. Now this enzyme is also involved in the ACE is also involved in the metabolism of bradykinin. Bradykinin नाम का जो केमिकल होता है उसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है? ACE, angiotensin converting enzyme. Now inhibition of ACE by this drug, ये ड्रग क्या करते हैं? ACE को इनहिबिट करेंगे. So what will happen? There is a increase in the amount of bradykinin, because bradykinin को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम भी कौन सा है? ACE, है ना. और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने वाला 2 में कौन सा एंजाइम है? वो ये इनहिबिट करना है. इट इज डिजायर्ड फॉर
anti-hypertensive effect due to inhibition. There is increase in the bradykinin level. ये bradykinin जो है दो काम करता है. So bradykinin does two works. Okay? So one first work is nothing but the bradykinin is a vasodilator. Vasodilator. The blood vessel को dilate करेगा, blood pressure कम करेगा. Right? On the another hand, bradykinin is also responsible for the asthma, and that's why these drugs, anti-hypertensive drugs, okay, enalapril, lisinopril, prasugrel, ACE inhibitors, when they are used, they produces the rise in the level of bradykinin, and that's why there is a asthma known as a dry cough. So one of the important adverse effect of ACE inhibitor. So when they are used, they produces the persistent dry cough. They produces the persistent dry cough because of the increased level of bradykinin. Why? Because ACE also involves in the metabolism of bradykinin. तो इनका एडवर्स इफेक्ट होता है कि ड्राई कफ, persistent dry cough. क्यों होता है? Because these ACE inhibitors, they inhibit the ACE, they inhibit the angiotensin converting enzyme, and this enzyme is also responsible for the metabolism of bradykinin. तो इसको इनहिबिट किया तो मेटाबॉलिज्म ब्रैडिकाइन का होगा नहीं, मतलब ब्रैडिकाइन बॉडी में क्या होगा, बढ़ेगा. Okay, so increase the bradykinin, though it helps to decrease the blood pressure by vasodilating, but on the other hand, increase the bradykinin in the lungs causes persistent dry cough. आया समझ में? Are you getting or not? So we'll see these drugs. Now first, ACE inhibitors. Okay, ACE inhibitors. So there are different drugs: captopril, lisinopril, enalapril, ramipril, benzopril, posinopril, quinapril. Okay, all these are the drugs. So out of that, remember captopril and lisinopril, they are not a prodrug. और बुक में कुछ बुक में और एक दिया है रेमिप्रिल, केडी त्रिपाठी और सातशुक्र भंडारकर में ये दिया है, इसलिए ये दोनों कैप्टोप्रिल एंड लिसोनोप्रिल आर नॉट अ प्रोड्रग. अदर इनाप्रिल, रेमिप्रिल, बेंजाप्रिल, ओसिनोप्रिल, क्विनिप्रिल, they are the prodrug. If they are the prodrug, then what is the active metabolite? So this relate. से इनाप्रिल का एक्टिव मेटाबोलाइट होगा इनाप्रिलेट, रेमिप्रिल का रेमिप्रिलेट, बेंजाप्रिल का बेंजाप्रिलेट. ओके, सो all ACE inhibitors, they are the prodrugs except captopril, and इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, remember. Okay, now again, if they are prodrugs, they are active metabolite. Okay, remember the structure of captopril में क्या है? So क्वेश्चन आ चुका है एक बार, which amino acid is there present, which amino acid present in the structure of captopril, which amino acid is there in the structure of captopril. देखो इसके नाम में ही आप बोलते हो नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा होता है, बस है ना, वो नजर चाहिए. मतलब कहने के लिए होता है ना कि कीचड़ कीचड़ जो होता है, कीचड़ में भी स्वर्ग नजर आता है, कीचड़ में भी स्वर्ग नजर आता है. बस आपकी आंखें जो है ना वो सुअर की चाहिए. अगर आपकी आंखें सुअर की है तो आपको कीचड़ में भी स्वर्ग नजर आएगा. ठीक है, तो वैसे होता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है. कैप्टोप्रिल मतलब क्या है? प्रिल मतलब प्रोलीन. सो प्रिल इज फॉर प्रोलीन. तो विच अमीनो एसिड इज देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन? कैप्टोप्रिल. कैप्टोप्रिल. तो ये कैप्टो से कुछ मिलता है क्या? देखो कैप्टो से क्या मिल रहा है, एक ग्रुप का नाम है, देखो उसमें कैप्टो आता है. कौन से? मार्केप्टो. मार्केप्टो एसएच ग्रुप. एसएच ग्रुप मतलब क्या है? मार्केप्टो. So in the structure of captopril you have proline amino acid and mercapto group, SH group, SH plus proline. और एक अमीनो एसिड आता है उसमें alanine. So proline, alanine and SH group, these are the structural feature of your captopril. उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. तो orally active ACE inhibitor क्या है? captopril, it is a orally active and it is nothing but the D3 mercapto 2 methyl propanoil D3 2 मार्केप्टो 2 मिथाइल प्रोपेनाइल प्रोलीन. तो इसमें प्रोलीन है, मार्केटो मतलब एसएच ग्रुप है, और इसमें एलानिन अमीनो एसिड भी है. और इट इज कॉम्पिटिटिवली ओके ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ angiotensin 1 to the angiotensin 2 and therefore prevents the pressure effect of the angiotensin 2 and also prevent the stimulation of aldosterone synthesis. angiotensin 2 क्या करता है ना, vasoconstriction करता है, मतलब प्रेशर इफेक्ट, एंड दूसरा क्या, एल्डोस्टेरोन को बढ़ाता है. So those two actions are blocked by ACE inhibitors. ACE, okay, angiotensin converting enzyme also metabolizes the one bradykinin. Okay, inhibition of ACE that leads to increasing the level of bradykinin. ACE क्या करता है? सिर्फ कन्वर्जन ही नहीं करता. ACE is also responsible for the metabolism of bradykinin. Okay, so
inhibition of ACE, therefore increase in the level of bradykinin. Okay, increase in the level of bradykinin. And substance P, they are the potent vasodilator. They are the potent vasodilator. Okay, but bradykinin also causes the cough in the lungs, in the bronchi. Later also contribute the cardioprotective effect of ACE inhibitor. The substance P vasodilating effect contribute the cardioprotective effect of ACE inhibitor. In the hypertensive subject, captopril will decrease blood pressure both systolic as well as diastolic. And again, several effect in a congestive heart failure, beneficial effect in the CHF. तो ये जो ACE inhibitors है, they are also used in the congestive heart failure and also increasing the exercise tolerance. मतलब they are also used in the angina pectoris. Yeah. So after this, we are going to see angina pectoris. So these drugs are used as antihypertensive, also used in the congestive cardiac failure, also used in the angina. Okay. Now, what are the adverse drug reaction? What are the adverse drug reaction? So persistent dry cough. इसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन है. Persistent dry cough is adverse effect of ACE inhibitor. Is due to the increased level of bradykinin. Other adverse effects are like skin rash, proteinuria, agranulocytosis. Agranulocyte का लेवल कम हो जाएगा. Disturbance in the taste. Taste का है ना, disturbance in the taste. ये लिखा है disturbance in the sense of taste. अभी वही आपने को एड़ा बनाते हैं. कौन? जीपेट वाली. आपको कैसे एड़ा बनाएंगे देखो. इधर एक एडवर्स इफेक्ट लिखा है मैंने. डिस्टर्बेंस इन द सेंस ऑफ टेस्ट. इसका सिनोनिम क्या है? So what is the term used to indicate the disturbance in the taste? The term is nothing but dysgeusia. Dysgeusia. So they used to ask you a question. Dysgeusia is the adverse effect of following ACE inhibitor. They used to ask a question like this. Dysgeusia is the adverse effect of following antihypertensive. ऐसे ही मतलब अलग कुछ नहीं है. बस आपको सिर्फ क्या है, मैंने वही से बोला ना, आपको पहले ही बोला है कि अगर आपको कीचड़ में भी स्वर्ग दिखना है तो आपकी नजर सुअर की चाहिए. सुअर की नजर हो, सुअर का स्वर्ग किसमें होता है? कीचड़ में ही. वैसा डिस्टर्बेंस इन द सेंस ऑफ टेस्ट. विटिलिगो हेडेक. विटिलिगो मतलब क्या है? विटिलिगो हेडेक. then GIT disturbances, muscle cramp. Drug should be avoided in the pregnancy because okay, so these are the teratogenic drugs. ये क्या है? Teratogenic drug है. All these ACE inhibitors, they are contraindicated in case of pregnancy. They should be avoided in the pregnancy because they can cause fetal toxicity. Okay. ACE angiotensin converting enzyme is not a specific enzyme, and inhibition of these leads to adverse effect. Leads to adverse effect, like dryness of persistent dry cough, and it has other subset like bradykinin and substance B, urocinin. क्योंकि एस इनहिबिटर जो एस क्या करता है, इसको मेटलाइज करता है, इसको ब्रैडिकाइनिन को, सब्सटेंस पी को, न्यूरोकाइनिन को. सो दैट्स व्हाई रिमेंबर द एस इनहिबिटर्स. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? Okay, now ACE inhibitors, what they will do, they inhibit the conversion of ACE inhibitors. What they will do, inhibit the angiotensin converting enzyme, and that's why no formation of angiotensin second. They prevent the formation of angiotensin second. No formation of angiotensin second. So there is no vasoconstriction. As there is no angiotensin second, no vasoconstriction. That's why vasodilation, and that's why peripheral resistance will be decreased. Blood pressure will be decreased. Then angiotensin second also decreases the sympathetic activity. So decreases the peripheral resistance. Also decreases the noradrenaline release. So noradrenaline release. That's why decrease in the cardiac output. Also causes no sodium water retention. Decreased sodium and water retention. That's why decrease in the cardiac volume. That's why decrease in the cardiac output. That's why decrease in the blood pressure. Again, lack of nitric oxide release. Okay. Also, they are also vasodilator, and that's why they will decrease the oxygen consumption of your heart. So dyspogenic action, decrease in the cardiac. And again, so inhibition of angiotensin converting enzyme.
So there is no metabolism of kinins like bradykinins, substance P and neurokinin. Again vasodilation. So they also contribute and they also contribute to decrease in the blood pressure. But also because of the increased level of bradykinin, you will get a cough. That's how they decreases the blood pressure. Are you getting or not? Now uses of this ACE inhibitor. क्या है उनकी use? Uses of this ACE inhibitor. So they are used in the all type of hypertension, all grades of hypertension, and can be combined with the diuretics to reduce the hyperkalemia. Okay, to reduce the hyperkalemia, and they are combined with the diuretics to reduce the hyperkalemia, except potassium sparing diuretics. It has a little tendency of weakness and sexual dysfunction. It is used in the chronic congestive cardiac failure, diabetic neuropathy, acute myocardial infarction. ओके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर नेक्स्ट क्लास आता है आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये क्या करेंगे दे विल ब्लॉक द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बिकॉज आफ्टर ऑल एंजियोटेंसिन सेकंड जो बना है it will act on a angiotensin receptor 81 and then only cause vasoconstriction. So angiotensin receptor blocker they are the competitive inhibitor of angiotensin second receptor. इसमें सब आता है sartans, वो sartan बाकी सब sartans आते हैं losartan, valsartan, ipresartan, iprosartan, candesartan. Prototype is a losartan. So selective angiotensin second receptor type 1 antagonist, 81 receptor antagonist. Because of the specific inhibition, they have less adverse effect like captopril. Still, they can increase the bradycardia due to 81 receptor blocking. Bradycardia कर सकते हैं due to 81 blocking. मतलब vasoconstriction नहीं होने के तो vasodilation होगा bradycardia हो. So if है ना जैसे ये मैंने बोला था आपको यहाँ पे these drugs they are contraindicated in case of asthma. ये जो ACE inhibitors तो किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसमें दे दिया ये ड्रग क्या होगा there is a exacerbation of asthma. अस्थमा अगर है किसी पेशेंट को और आपने दे दिया ACE inhibitors वो क्या करेंगे एस को तो इनहिबिट करेंगे हाइपरटेंशन तो कम करेंगे लेकिन वो आप ब्रैडिकनिन का लेवल बढ़ाएंगे दैट कैन कॉज सीवियर अस्थमा दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंस्टेड ऑफ दिस इन अस्थमेटिक पेशेंट अस्थमा पेशेंट है अस्थमा का इसमें ये एस इनहिबिटर नहीं यूज करना है उसके बदले क्या यूज करना है उसके बदले ये करना है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है तो हर एक चीज डिटेल में बोलना पड़ता है वो सर्टन सो सेलेक्टिव एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 ब्लॉकर एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके इट कैन कॉज fetal toxicity and should not be used in the pregnancy contraindicated in case of renal stenosis में contraindicated it can cause adverse reaction like skin rash neuropsychiatric symptoms like insomnia confusion nightmares agitation depression दूसरा आता है salarsin salarsin is a competitive antagonist for angiotensin second as well as partial agonist. It can be used in the it is used as a diagnostic agent. ये बाकी सब जो है लो सर्टन के भाई बंधु है ना सब इसके बंधु कौन है वालसर्टन इप्रेसर्टन इप्रोसर्टन कैंडेसर्टन ऑल दीज आर द एनालॉग्स ऑफ लो सर्टन उसके ही भाई बंधे हैं उसकी टोली में ये सब आता है ये गैंग है उनका नेक्स्ट आता है आपका डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सम एस इनहिबिटर कैप्टोप्रिल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है 6 to 12 आवर कैप्टोप्रिल विल एक्ट फॉर 6 to 12 आवर्स डोज होता है 12.5 to 12.5 mg to 50 mg इनिशियली 12.5 mg स्टार्ट करना है कैप्टोप्रिल का एस इनहिबिटर्स एंड दे आल्सो कॉजेज द फर्स्ट डोज फिनोमेनन इन अप्रैल का होता है 24 आवर्स है ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नियर अबाउट 24 आवर्स ही उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कैप्टोप्रिल इन अप्रैल लिसिनोप्रिल पेरेंटोप्रिल है ना फोसिनोप्रिल बेंजाप्रिल एंड रैमोप्रिल देन नेक्स्ट है आपका एंटीहाइपरटेंसिव वाला ये सर्टन वाले सर्टन्स सर्टन वाला कौन है लो सर्टन 50 mg डोज होता है उसको ओरल बाकी ड्रग एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग डेली डोज एंड रोड ये एनिपेडिपिन सबलिमिनल से देते हैं डाइजॉक्साइड इंट्रावेनस से सोडियम नाइट्रोफॉस्फेट अगेन इंट्रावेनस बाकी ये क्लोनिडीन मिथाइलडोपा एड्रेनल प्राजोसिन हाइड्रोलाइसिन सबके ओरल है हाइड्रोक्लोराइड एमिलोराइड सब ओरल यूज करते हैं
hydrochlorothiazide. Now next is the diuretics. Blood pressure you can decrease by different way. जैसे मैंने बोला है कि आप centrally you can prevent the synthesis, you can prevent the release, you can deplete the storage house, you can block the ganglia, you can control the release, you can block the ganglia, you can block the adrenergic neuron, or if you fail then you can block the alpha receptor. If you can block the beta receptor, again you have failed, you can go to the kidney, you can prevent the conversion of angiotensinogen by inhibiting the renin. Or if you fail, then please then again you have chance, you can prevent the conversion of angiotensin 1 to second by ACE inhibition. Again you can block the angiotensin 1 receptor, again you can block the aldosterone receptor. Okay, and if not there, then you can use vasodilators. So उसमें भी बहुत सारा टाइप है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, arteriodilator, venodilator, right? Arterio plus venodilator. Then again if you don't have choice, then you can use diuretics. How diuretics will, they will decrease the blood pressure. देखो diuretics क्या करेंगे, they will increase the urine formation. So they will increase the urine formation, and what will they do, they will increase the urine formation and they will decrease the blood volume. They will decrease the blood volume. Volume कम करेगा blood, and that's why if blood volume is decreased, the cardiac output will also decrease. Cardiac output is decreased, then your blood pressure will also decrease. That's how they will decrease the, that's how they will decrease the blood pressure. Okay. Diuretics, thiazide diuretics, they are mostly used. So remember, first line drug, thiazide diuretics are the first line drug. अपने diuretics के बारे में पूरा अपन diuretics chapter में डिटेल में देखेंगे. So diuretics are the first line drug used for the treatment of hypertension. They reduce the blood pressure by several mechanisms. पहला mechanism क्या है? Diuretics क्या करेंगे? Diuretics they will decrease the, okay, diuretics they will increase the excretion of किसका? Sodium. Diuretics they will increase the excretion of sodium. सोडियम का एक्सक्रीशन किडनी से बढ़ाएंगे, सोडियम को हटा देंगे बॉडी से. सोडियम के साथ साथ में क्या है, वाटर जाएगा, बिकॉज सोडियम और वाटर ये दोनों में इतना ज़्यादा प्यार है ना, इतना ज़्यादा अफेयर है उसमें, सोडियम वाटर में, ये ये दोनों है ना, एक में के बिना जी नहीं सकते. मतलब जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ पे वाटर जाएगा, है ना. वैसे कैसे, जैसे वो एग्जाम्पल है पाकिस्तान इंडिया का, है ना, सीमा हैदर और ये सचिन, वो वाला. तो जैसे जहाँ पे सीमा वहाँ पे हो जाता है, तो वैसे सोडियम एंड वाटर के बीच में अफेयर चल रहा है. जहाँ पे सोडियम सोडियम अगर ब्लड में जाएगा, वाटर भी उसके साथ जाएगा. सोडियम अगर किडनी से बाहर जाएगा तो वाटर भी उसके साथ जाता है. उनमें एक गहरा अफेयर है, ठीक है, याद रखना है आपको. सो what diuretics will do, they will excrete the sodium. सोडियम चला गया तो वाटर भी जाएगा, ऑब्वियसली वाटर भी जाता है ना. सो दैट विल डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. सो डायरेटिक्स विल डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, दैट फर्स्ट. सेकंड थिंग, ये सोडियम को हकल रहा है, मतलब बॉडी का सोडियम भी कम हो रहा है. सो सोडियम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूटिंग द ब्लड प्रेशर. तो सोडियम विल ऑल्सो भी डिक्रीज. सोडियम का लेवल डिक्रीज कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम कर रहा है, ठीक है, right? And that's why they decrease the cardiac output and may produce mild vasodilation also. They also produce some mild vasodilation. देखो, so diuretics contribute the anti-hypertensive effect by three mechanisms. First, they will decrease the blood volume by promoting the diuresis. Second, they will decrease the blood pressure by decreasing the sodium amount of sodium, and then also they will cause mild vasodilation. Again, they will decrease the blood pressure. These are three mechanisms. दे में प्रोड्यूस माइल्ड वैसोडाइलेशन. कैसे करेंगे, अगर सोडियम को हकाल दे रहा है तो सोडियम कम है बॉडी में, तो डीपोलराइजेशन, सोडियम को एंट्री सेल में नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा. सो इनहिबिटिंग द सोडियम एंट्री इनटू द वैस्कुलर स्मूथ मसल. दैट्स हाउ डायरेटिक्स विल हैपन. एडवर्स रिएक्शन क्या होंगे, तो डायरेटिक्स क्या करता है, सिंपल है, मतलब एडवर्स इफेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना. वो यूट्यूब वाले बोलते हैं आपको ट्रिक्स लगाओ, ट्रिक्स, फिर आप लगाते हो ट्रिक्स, फिर आपका ट्रिक्स ही बन जाता है, क्योंकि वो आपके ध्यान में नहीं रहता है. आपके ध्यान में क्या रहता है, ट्रिक्स रहता है, बाद में उसके पीछे का आगे का सब भूल जाएंगे. डायरेटिक्स मतलब क्या, दे विल इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन कब होगा, जब सोडियम निकलेगा तभी जाके वाटर निकलेगा, राइट. सो दे विल कॉज, सोडियम को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट. सोडियम का लेवल कम होगा तो क्या होगा,
हाइपोनाइट्रेमिया। लेकिन हाइपोनाइट्रेमिया कौन करता है? सीवियर डायबिटीज, लूप डायबिटिक्स, है ना, हाई सीलिंग डायबिटिक्स से इथाइलिक एसिड फ्यूरासेमाइड विल कॉज हाइपोनाइट्रेमिया। बट सोडियम बड़ा भाई है, पोटेशियम उसका छोटा भाई है ना, पोटेशियम को इजीली मार देता है कोई भी, पोटेशियम निकल जाएगा। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, देन हाइपर यूरेसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ा देगा, देन हाइपोग्लाइसीमिया, moderate increase in the serum HDL level, high density lipoprotein। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स वही करते हैं कि हाइपोकैलेमिया, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, थायराइड पर्टिकुलरली। ये थायराइड क्या करते हैं? देखो, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, डायबिटीज देखा है आपने, सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ metformin, you know, and all that, they are nothing but the sulfonamides, and thyroid is also sulfonamides, so they will cause hypoglycemia. So hypokalemia, hyperuricemia, increase in the uric acid level, moderate increase in the serum HDL. They are most valuable and highly cost-effective drugs. They are the most valuable, safe, and highly cost-effective anti-hypertensive. Thiazides are the first line drug for hypertension. Indapamide, again, is very important. Indapamide is very, it is mostly used. Indapamide and zipamide, they are the zipamide, indapamide, they are the similar drug to chlorothalidone. Chlorothalidone was the first drug from diuretic category. ड्रॉबैक ऑफ डायबिटिक्स एज एंटी हाइपरटेंसिव कि हाइपोकैलेमिया करेगा। हाइपोकैलेमिया प्रिवेंट करने के लिए आपको पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स यूज करना होगा। रिजल्ट इन द मसल पेन, मसल फटीग एंड लॉस ऑफ एनर्जी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन द मेल, carbohydrate intolerance, precipitation of diabetes, dyslipidemia, and hyperuricemia, increase the risk of sudden cardiac death. So these are the adverse effects. Loop diuretics or high ceiling diuretics जैसे furosemide or ethacronic acid, they are not recommended for moderate hypertension. Potassium sparing diuretics can be used to prevent the risk of hypokalemia with the other diuretics. So how they will act? Anti-hypertensive mechanism of diuretics क्या करेंगे? तो फर्स्ट दे विल डिप्लीट द फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब ड्यू टू डायलिसिस ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, and due to blood volume, if decrease in the blood volume, there is decrease in the cardiac output and blood pressure. Secondly, they will excrete more sodium from the body, sodium को हटा देगा body से, okay? Also decrease the calcium, hypokalemia, hypocalcemia, hyponatremia, so that result in the blood vessel relaxation. blood vessel relax हो गया, peripheral resistance क्या होगा? कम होगा। आपको मालूम है फिर क्या है? BP is equal to CO into PR, है ना, PR, BP is equal to CV into PR. BP मतलब blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. So that's how this drug they will decrease the blood pressure. इसमें किसको डाउट है तो पूछो। और मिसलेनियस ड्रग्स, तो उसमें मिसलेनियस में आता है मेटाइरोसिन। मेटाइरोसिन इज nothing but the false neurotransmitter. So it will block the synthesis of catecholamine by inhibiting the tyrosine hydroxylase enzyme, and it is useful in the pre-operative treatment of patient with pheochromocytoma. pheochromocytoma मतलब कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको कैंसर है उसमें क्या है कि नॉरएड्रेनल का लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण उसको हाइपरटेंशन होता है। सो दिस मेटारोसिन इज यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन इन द ऑपरेशन ऑफ pheochromocytoma। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? जीआईटी सिम्टम्स के ऊपर, जीआईटी सिम्टम्स मतलब नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया, तीनों छिपा दो। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, देन क्रिस्टल यूरिया, nasal congestion, word दिया है, I think both of. Then gynecomastia, peripheral edema, they are not indicated in case of essential hypertension. Drug therapy of hypertension in the elderly patient, जो बूढ़े पेशेंट है उनमें क्या है? Complex drug therapy of hypertension in the elderly patient is a complex, and complex multiple regimens, they are the avoided, best to avoid it in elderly as they may be confusing. तो elder patient में जो है ना, दो ड्रग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे थायराइड बीटा ब्लॉकर्स, बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स दे इंक्रीजेस द पोटेशियम लेवल, थायराइड डायबिटिक्स
they decreases the potassium level. So that's why they are combined together. Okay. Drug therapy of hypertension in the pregnancy. Drug therapy of hypertension in the pregnancy. So इसके ऊपर क्वेश्चन आया, मिथाइल डोपा is a drug of choice. Methyl dopa is a drug of choice in the hypertension in the pregnancy. It is effective. It is a safe for mother as well as fetus. Then clonidine, nifedipine, they can be used safely. जो बीटा ब्लॉकर होता है लेपेटोलॉल, इट इज हिपेटोटॉक्सिक. एस इनहिबिटर क्या करेंगे, ओलिगोहाइड्रोनोमास, ओलिगोहाइड्रोनोमास मतलब ये कम टेंशन फ्लूइड कम करेंगे. ACE inhibitors, they are absolutely contraindicated in case of pregnancy. Diuretics are not a first line drug in the pregnancy. Diuretics are the first line drug in the treatment of hypertension, but not in the pregnancy, as they can cause depletion of intravascular volume and neonatal thrombocythemia. यानी neonate में क्या करें, thrombocytes को कम करेंगे, बेबी में क्या करेंगे, thrombocytes का लेवल कम करेंगे, thrombocytopenia. So magnesium sulfate. Magnesium sulfate is a drug of choice for prevention and treatment of eclamptic conversions in the pregnancy. Eclamptic conversion क्या होता है, during the pregnancy if there is a hypertension, okay, that is known as a preeclampsia. That is known as a preeclampsia, and due to that hypertension, there might be a conversion भी हो सकता है, eclampsia भी हो सकता है. That is known as a eclamptic conversion. Okay, magnesium sulfate is a drug of choice. तो question आ चुका है. So what are the uses of, okay, we have seen different. इसमें से सिर्फ आपको यूजेस एंड कुछ एडवर्स इफेक्ट जो है वो रिवाइज करता हूँ. तो सबसे पहले, ओके, सो एंटी हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स. यू नो दैट हाइपरटेंशन मींस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर अबव 140 to 90. Systolic, if there is increase in the systolic 140 and 90 diastolic, so there is a hypertension. Okay. Now, hypertension may be either primary hypertension, or primary is known as essential hypertension, or secondary. Essential मतलब cause is unknown. Secondary means it is secondary to the condition like kidney में कोई दिक्कत है, renal or endocrine or vascular disorders. So mild increase in the blood pressure is nothing but the diastolic blood pressure is EPO. Diastolic is 104, known as a mild, है ना. Moderate increase कब होगा, 105 to 114. Hypertension more than 115 diastolic blood pressure. You know that it is a product of cardiac output. Blood pressure is a product of cardiac output into peripheral resistance. If you have hypertension long time, so prolonged hypertension will damage the blood vessel of the heart. Prolonged hypertension, अगर ज़्यादा देर तक hypertension आया, ज़्यादा दिन तक, if you are suffering from hypertension for longer period, so definitely your blood vessels of heart will be damaged. Brain and kidneys may result in the severe complication like stroke. स्ट्रोक भी बैठ सकता है आपको. स्ट्रोक मतलब क्या, आजकल उसको पैरालिसिस बोलते हैं. स्ट्रोक, coronary artery disease, renal failure, hence hypertension need a treatment. Okay? Need a treatment. Now different drugs. So जैसे मान लीजिए diuretics, in that you have different classes, thiazide, hydrochlorothiazide, chlorothiazide, indapamide. Loop diuretics में आता है आपका furosemide, bumetanide, torsemide. पोटेशियम स्पेयरिंग में आता है amiloride, trimetrin, spironolactone, iprelenol. नेक्स्ट आता है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर. इसमें से कैप्टोप्रिल, लिनाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसोनोप्रिल, रामिप्रिल, पेरेंटोप्रिल, बेंजाप्रिल आएगा. देन नेक्स्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंडरी रिसेप्टर ब्लॉकर, सर्टन वाले सब आएंगे. सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में आएगा सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, गोनाबेंज एंड गोनफेसिन, दे आर द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर. देन गैंग्लियोनिक, है ना, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में आएगा ट्राइमिथोफॉर्म. एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर में आएगा गोनाथिडीन. रिजर्पिन इज नथिंग बट द कैटेकोलामाइन डिप्लीटर. अल्फा ब्लॉकर में आएगा प्राजोसिन, टेराजोसिन, टोक्सोसिन, नोक्सिबेंजामाइन, पेंटोलामाइन, दे आर द नॉन सिलेक्टिव. जोसिन वाले जो सिलेक्टिव है. बीटा ब्लॉकर में आएगा लॉल, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल. इसमें बहुत सारे सब टाइप है. अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर में आएगा लेपेटोलॉल, कार्बिडोल. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल, निपेडिपिन, वेरापामिल, डेल्टियाजेम, है ना. Verapamil is a phenyl alkylamine derivative
and diltiazem is nothing but the benzothiazepine derivative, and बाकी जो डिपिन्स है they are diatripyrimidine derivative. Vasodilators में arteriolar आएगा, arteriolar vasodilator में arterisine benzoyl डाइऑक्साइड, वेनोडाइलेटर में आएगा सोडियम नाइट्रोक्साइड, आर्टेरियो प्लस वेनोडाइलेटर में आएगा आपका आर्टेरियो प्लस वेनोडाइलेटर सोडियम नाइट्रोक्साइड, वेनोडाइलेटर में आएगा आपका ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, दे आर द वेनोडाइलेटर, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह। एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर क्या है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर, देखो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर, angiotensin converting enzyme inhibitor. First adverse play, persistent dry cough, persistent dry cough, persistent dry cough due to increased bradycardia level. Then hypotension, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो हाइपोटेंशन करेगा ही करेगा, ऑल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विल प्रोड्यूस हाइपोटेंशन। पहला होता है पर्सन ड्राई कफ, दूसरा होता है हाइपोटेंशन। कब करतेगा, कब हाइपोटेंशन करेगा? सो ऑन द इनिशियल डोज, on the initiation of therapy, ACE inhibitors may cause significant hypotension. That is known as a first dose phenomenon. That is known as a first dose. Okay. Then hyperkalemia. ACE inhibitors will increase the potassium level in patient with the potassium sparing diuretics. Then dysgeusia. देखो ये बोलूँगा मैं, dysgeusia. Altered taste sensation. Then angioneurotic edema. हाँ ये मैं भूल गया था, बोला था कि angioneurotic edema मतलब क्या है? So they will cause swelling of lips, nose, larynx, airway, congestion in the nasal congestion. That is due to angioedema, nasal congestion, angioedema. Then skin rash होगा, teratogenicity. So given ACE inhibitors are the teratogenic in nature, and they will cause malformation and growth retardation, malformation of lungs in the fetus. Other effect क्या है? Other adverse effect. बाकी सिंपल होते हैं, जैसे प्रोटीनूरिया, नोशिया, वोमिटिंग, न्यूट्रोपेनिया वगैरह। यूजेस क्या है उसके? यूजेस दे आर यूज्ड इन द हाइपरटेंशन. ACE inhibitors are useful in the all types of hypertension. Combined with the diuretics, they are generally combined with thiazide diuretics without potassium sparing because they can cause hyperkalemia. They are antihypertensive in the hypertension with the left ventricular hypertrophy. और लेफ्ट वेंट्रिकल अगर बड़ा हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। पेशेंट विद डायबिटीज में भी इसको बिकॉज ACE inhibitor show slow development of neural. बाकी बहुत सारी यूजेस है, रेनल डिसीज वगैरह इसमें, मायोकार्डियल इंफेक्शन में भी यूज करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में भी यूज करेंगे, रीनल फेलियर में